A very good evening to everyone. Hi, this is Vinit Singh from MCX. I am Senior Manager representing the Training and Education Department of MCX. We welcome you all to this webinar on commodity derivatives and orientation more towards option and index derivatives, which we have on the exchange. So what I do is I quickly share the presentation with all of you so that we are on roll, and then we will have a quick understanding on the products which are available on the exchange. So here we go. I'm starting. Yeah. Again, welcome you all for this seminar on commodity products which are available on MCX. Now, a very important point to go ahead is what all products are traded on the exchange. I'll quickly cover. We have four main segments on the exchange. The first is the bullion side, which includes products like gold and silver, wherein we have both futures and options running and available for all the market participants. Gold, the color which you see is in black, is the futures contract with different sizes. We have different products, different contracts which are attributed in these sizes of products available. Like we have gold 1 kg contract, gold mini, M stands for mini, it's a 100-gram contract. Likewise, we have gold guinea 8 grams, gold petal 1 grams. Similarly, in futures, we have in the same bullion segment products which have underlying as silver. So derivatives are available in three sizes: 30 kg silver contract, 5 kgs and 1 kgs respectively. We have options in both gold and silver. In gold we have 1 kg options and 100 grams options, which were launched recently. Gold mini options on 25th of April 2022. We have silver options on 30 kgs, silver mini options on 5 kgs. Similarly, in the second segment we have is energy products, wherein crude oil, natural gas futures are available, और उसके साथ crude oil options और natural gas options भी available है. Third segment जो exchange पर है, what we have is base metals, जिसमें 5 base metals, aluminium, copper, lead, nickel, zinc are available in futures with the size of respectively 5 tons for aluminium, lead and zinc contract. Copper contract 2.5 metric ton का है, निकल 1.5 metric ton. ऑप्शंस हमारे पास इसमें 3 प्रोडक्ट्स में अवेलेबल हैं. कॉपर ऑप्शंस 2.5 metric ton contract, निकल ऑप्शंस on 1.5 metric ton contract and zinc options on 5 metric ton. The fourth segment what we have here is agricultural side, जिसमें cotton, कपास, mentha oil और rubber के contracts available हैं futures में trade करने के लिए. Apart from these, we also have segmental index derivatives. When I say segmental indexes, we have 4 segments on the exchange, but as of now, the approval which we have received from regulators to have derivatives in index is on segmental base. So if I say segmental base, we have Boolean index, which we popularly say as Bulldex or MCX iComdex Boolean. It is a segment index representing gold and silver side. On this, we have Boolean index futures. Then we have metal index, which is MCX iComdex metal, and metal index futures are available on this index. This metal index is representing aluminium, copper, lead, nickel, zinc. These are the constituents. And in a weightage, they are aligned to form this index, which is live. The third segmental index available here right now for trading in derivatives is energy index. We call it as MCX iComdex energy or energy dex. We have futures available on all these products, but the encouraging point is, like we have seen over years since options were allowed by the regulator, and we have seen new products being introduced in option as a derivative. Latest one would be options on natural gas. We had options on gold mini options, which was launched in 2022, both of them. Likewise, we have already received the guidelines from regulator to start something called as options on these segmental indices.
So we have already, done a lot of homework on the guidelines which we have received and have submitted a rough guidelines to the blueprint to the regulators for their vetting. And once product is vetted and approved, we'll very soon, maybe in coming months, also launch index options as well, and it will be available for all of you to work on and trade. So this is from the overall product availability on MCX. And since our main focus today would be two segments, which is options and indexes, so let's go straight to this side. Options, as the name suggests, is a product which gives you a choice as a buyer and seller in a different way. Generally, there are two kinds of options in this derivative, which is a call option and a put option. Call option says the right to buy, and the put option is understood as the right to sell. So there are people, buyers and sellers of these options. Option is a non-linear product, so that is you can have one side limited. That brings in more advantageous for market participants to deal in these products. So with options, you can do strategies by which you can keep your downside closed and upside open. You can keep your upside limited and downside open. You can keep your both upside and downside limited and play in different scenarios with different views and strategies. Plus, when you trade in options, you need to pay a lesser amount of money as compared to dealing on futures on the exchange. It's a smaller value product. You can do a lot of strategies, and in combinations with futures and options, if you happen to have a portfolio wherein your delta is completely managed, so you also get margin benefits, with futures and options in a portfolio. So this is what option brings in to all the participants. Right now, as shown earlier in the previous slide, we have options on all these products which are available. On bullion side, we have on gold, silver. Out of this, the recent addition was gold mini options launched on 25th April. It's a 100-gram contract. Energy side, we had crude oil and natural gas options, and base metal side, we have copper, nickel, and zinc options. Now, commodity options, as it is written on the screen, it is options on futures. What does this mean? It is a derivative on derivative, like options in other markets, in equities or interest rates or currencies. Their underlying is the spot product. But options in futures, in commodity market, they have underlying as a running futures contract. So that makes it a derivative on derivative, which is option with underlying as a commodity futures contract. For example, if I say we are having a product which is gold mini options of 100 grams, so underlying for this gold mini options would be gold mini futures of 100 grams, which is already running on the exchange. Okay. So this is what is available in terms of the nature of product on the exchange. If you just go back to the data which is generally available on the website, is something historically available. You will find in last 13 to 14 months, you would have seen a lot of encouraging volumes which have happened on the exchange on the option side. Right, we have seen a lot of volumes coming out, and we have seen many days option volumes are surpassing the futures volumes on the exchange. So it is very encouraging. People are getting used to strategizing with these products on commodity side as well. And as I said, option is a smaller money wise involvement product as compared to futures. You can do a lot of strategies, so things are going to be more encouraging with more volumes in times to come, with more products being added you through options. One would be definitely index options, which would come in maybe some time from now. So, overall, if we just see the snapshot of products which are available in commodity derivative exchange on MCX, we have a slight contrast in a miniature form contract specification available in front of you right now, which says gold mini, silver mini. We just go by the first thing available here.
These products are having underlying as their respective futures contract. They are all European options, whether it is a Boolean segment option or an energy or a metal segment option. These are all European options. That means if you are a holder of the product, you are not allowed to exercise your positions anywhere before the expiry. It is only on expiry as a holder of options you can exercise your positions. That is why they are called as European option. Okay. Plus, if you see a contrast, Boolean options और metal options जो available हैं, इसमें अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, इसमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी प्रोडक्ट की एक्सपायरी को लेकर है. डेफिनेटली जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है हमको एक्सपायरी डे पता चल जाती है. अगर हम लॉजिक के हिसाब से देखें तो बुलियन साइड का जो ऑप्शंस का अंडरलाइंग है, जैसे गोल्ड फ्यूचर, सिल्वर फ्यूचर्स, या मेटल साइड का कॉपर फ्यूचर्स, निकल फ्यूचर्स, इनका जो अंडरलाइंग है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, वो एक्सपायरी पे डिलीवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. तो टेंडर पीरियड स्टार्ट होने से पहले अंडरलाइंग फ्यूचर्स के 3 बिजनेस डेज बिफोर हमारे ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, जो कि अंडरलाइंग फ्यूचर्स के ऊपर बेसिस हैं. वेयर एज on energy options, where in crude oil and natural gas, underlying product is cash settled. तो अंडरलाइंग फ्यूचर्स के एक्सपायरी से 2 बिजनेस डे पहले क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस फ्यूचर्स के ऑप्शंस खत्म होंगे. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर स्ट्रेटेजाइजिंग एंड रोलिंग ओवर पॉइंट ऑफ व्यू. Since these are options, it is a premium game. आपके पास बहुत सारे स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल होंगे काम करने के लिए. तो वो आपके सामने मैंने इट इज रिटन. तो अगर बुलियन साइड की आप बात करते हो तो आपको एनी टाइम 51 कॉल यूरोपियन पुट यूरोपियन अवेलेबल होंगे. क्रूड ऑयल पे 81 मिनिमम कॉल एंड पुट यूरोपियंस अवेलेबल होते हैं. नेचुरल गैस में मिनिमम 61 कॉल एंड पुट यूरोपियंस अवेलेबल होंगे, और बेस मेटल ऑप्शंस में एटलीस्ट 15 आपको कॉल एंड पुट यूरोपियंस मिलेंगे. ये सभी ऑप्शंस के जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं मिनिमम जो मैं आपको बता रहा हूं, ये स्ट्राइक प्राइसेस अपने एक गैप में अवेलेबल होते हैं, विच इज नॉट सेम. अगर आप देखेंगे गोल्ड और गोल्ड मिनी ऑप्शंस के जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो 100 रुपए के गैप से अवेलेबल होंगे. सिल्वर मिनी 250 रुपीज के गैप से. सिमिलरली क्रूड ऑयल ऑप्शंस 50 रुपीज के स्ट्राइक प्राइस इंटरवल में होंगे, नेचुरल गैस 5 एंड सो ऑन. एंड देयर टिक साइज जो कि मिनिमम प्राइस मूवमेंट है इज नॉट सिमिलर टू दी अंडरलाइंग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. तो ये भी एक ध्यान में रखना है. या गोल्ड मिनी एंड गोल्ड फ्यूचर ऑप्शंस का जो टिक साइज है 50 पैसा है, वेयर एज गोल्ड फ्यूचर्स और गोल्ड मिनी फ्यूचर्स का 1 रुपी है. तो देयर इज अ चेंज एंड डिफरेंस इज देयर. तो हमको टिक साइज देखना है कि मिनिमम मूवमेंट कितना होगा और उसका कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा. मतलब अगर ये गोल्ड मिनी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है तो एक टिक मूवमेंट में हमको 5 रुपए का आपको प्रॉफिट एंड लॉस पर कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखेगा. इफ इट इज अ गोल्ड मेगा कॉन्ट्रैक्ट तो 1 tick movement will have an impact of 50 rupees as profit and loss on your overall contract size. These products options are more playable products, more strategizing products. So open position limits on real time basis for client and members are twice what you will find on the futures contract. Daily settlement यहाँ पर T+1 basis पे होता है options में. Buyers का premium upfront block हो जाता है. फाइनल सेटलमेंट में थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, विद एन एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा आगे. बट एज ऑफ नाउ यू अंडरस्टैंड कि सिंस दे आर ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स, व्हाट हैपेंस डेली यू कैन डू अ लॉट ऑफ ट्रेड. एंट्री एंड एग्जिट इज फ्री. आप जितना भी चाहें एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटेजी के हिसाब से मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो. बट आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट ओपन पोजीशन में रहता है और वो एक्सपायरी के लिए जाता है, तो इफ दे आर एक्सरसाइजेबल पोजीशंस ऑन एक्सपायरी, देयर इज अ प्रोविजन कि आपके एक्सरसाइजेबल पोजीशंस डिवॉल्व होके कन्वर्ट होके अंडरलाइंग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं एंड देन दे फिनिश एज पर द सेटलमेंट ऑफ अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. तो ये फाइनल सेटलमेंट में होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपके सामने स्लाइड आई है, फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, the contracts available in options, you have their contract size, you have their tick size, और एक टिक पे कितना हार जीत प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो इंपॉर्टेंट है हमारे सामने रखना. और इन सब के जो अंडरलाइंग है वो उनके कॉरेस्पॉन्डिंगली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. तो दिस इंफॉर्मेशन इज, आई होप
we all know this and is very important when we are in the market. So example लेता हूँ, gold options पे एक टिक मूवमेंट पे ₹5 का हार जीत है. If I do a round trip and I don't know about the brokerage point of view, entry and exit करता हूँ, तो maybe within 3.5 to 4 ticks में I am easily able to achieve my break even and move towards profit. So this is how these products are there. तो आप इसमें churning कर सकते हैं and you can participate in different ways. यहाँ पे मैं आपको बात कर रहा था कि हम थोड़ा सा जो एक्सपायरी पे होता है डिटेल में बताएंगे. रेस्ट ऑल आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर, दे आर ऑल ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, डेली सेटलमेंट इज हैपनिंग ऑन T+1 बेसिस. बट फाइनल सेटलमेंट में क्या होता है, on expiry if you have open positions and they happen to be in the money, आपका अगर positions in the money चला जाता है, what happens on expiry, your positions automatically is converted or devolved into the underlying futures contract. इसका मतलब, in case if you are operating in gold mini options, okay, which recent current month expires on 25th of May, तो 25th of May पे expiry पे अगर आपका in the money position रहता है option पे, excuse me, तो that automatically gets converted into the underlying futures contract. वो आपका convert होके, अगर call options है तो convert होके buy futures gold mini बन जाएगा, और अगर put options है तो automatically convert होके sell gold mini futures में positions चले जाएंगे. ओके, आप इन द मनी होने के बाद भी यू कैन से नो टू दिस कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी. उसके लिए आपको कॉन्ट्ररी इंस्ट्रक्शंस देना होता है एक्सचेंज को. एंड इन दोज केसेस where we receive contrary instructions from in the money positions holder, we don't take their positions ahead as a future contract. आपके positions worthless expire हो जाते हैं, in the money profit zero हो जाता है. तो it is advised that if in case you are in the money and you don't want your positions to go ahead, so you should square off your positions prior to the expiry so that you get the in the money profit. If you decide not to take your positions forward as a futures contract on expiry, so you lose on your in the money profit. Okay, जब कॉल कन्वर्ट होता है, बाय पोजीशंस कन्वर्ट हो जाती है फ्यूचर्स में, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंगली सेल कॉल कन्वर्ट हो जाएगा सेल फ्यूचर्स में. बाय पुट कन्वर्ट होता है सेल फ्यूचर्स में, तो सेल पुट कन्वर्ट हो जाएगा बाय फ्यूचर्स में. दैट हैपेंस ऑटोमेटिकली. तो ये डिवॉल्वमेंट प्रोसेस जो है, अगर फिर भी अगर नहीं क्लियर हो रहा है, तो आई हैव टू एग्जांपल्स पिक्टोरिकली हम समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है. सी, if I say this is a gold mini futures contract which is running, near month contract 3rd June को खत्म होगा. Okay, on these contracts we have launched gold mini options which is already available. ये 25th April से launch हो चुका है gold mini options. This mini option contract is slightly shorter than the futures contract because futures contract तो इसका underlying है. तो as per the contract specification जो मैंने आपको बताया था expiry day, this contract expires on 25th of May. लॉजिक क्या है, 3rd जून का जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, इसका टेंडर पीरियड स्टार्ट होने से 3 बिजनेस डेज पहले, which happens to be 25th of May, this contract ceases to exist. यहाँ पे वो खत्म हो जाएगा. 25th May को एक्सपायरी पे जितना भी ओपन पोजीशंस है इन दी मनी होगा, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके हमारा अंडरलाइंग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाएगा. 26 मई को सारे जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट थे वो ऑल कन्वर्ट होके एज अ फ्यूचर्स ट्रेड होंगे. सो यू कैन लेट देम एक्सपायर एज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और यू कैन स्क्वेयर ऑफ योर पोजीशंस, बट वो 25 मई के बाद, एक्सपायरी के बाद वो फ्यूचर्स बदल जाएंगे. यहाँ पर अगर आपके आउट ऑफ द मनी पोजीशंस है, वो सारे वर्थलेस एक्सपायर हो जाएंगे. Okay, and one more question, when we talk about options, it comes to our mind is what happens to the people who are getting their positions converted. तो वो तो अभी तक बायर थे, वो तो प्रीमियम दे के काम कर रहे थे. तो ऑप्शंस में क्या होता है, लास्ट के 2 डेज पे स्टार्टिंग ऑफ द डे डिवॉल्वमेंट मार्जिन एप्लीकेबल होता है. तो 25th मई को बेस्ड ऑन द सेंसिटिविटी रिपोर्ट विच एक्सचेंज सेंड्स 4 days prior to the expiry, उसके बेसिस पे 24th मॉर्निंग को फ्यूचर्स का जितना मार्जिन होता है उसका 25% ब्लॉक हो जाता है. 25th मई को 50% ऑफ द फ्यूचर मार्जिन और ब्लॉक हो जाएगा, राइट, फॉर पीपल ऑन द लास्ट 2 days. एंड वंस
your position gets converted or devolved into the futures contract, remaining margin 26th को block हो जाएगा. So this is, how the contracts are working. But this is only on expiry. So contract जब से available है 25th में, expiry से पहले आप उसमें multiple times entry exit strategizing कीजिए. No worries on that. But in case if you happen to have your positions till expiry and if they are in the money, they get converted into futures. If they're out of the money, they expire worthless. This was for the example of a product which has an underlying as a delivered product. इसमें futures contract delivery वाला है. एक एग्जांपल देख लेते हैं. जब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैश सेटल्ड है, किसमें कैश सेटल्ड होता है? क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में. तो एग्जांपल ले लेते हैं नेचुरल गैस फ्यूचर्स का. May में 25th of May is when this natural gas futures contract will expire near month. Based on this, we already have a running natural gas option contracts. So as per understanding जो मैंने पीछे बताया था, natural gas option contract 2 business days पहले खत्म हो जाएगा अपने underlying future से. तो 23rd May को ये contract एक्सपायर होगा. सेम तरीके से अगर आपके इन द मनी पोजीशंस हैं एक्सपायरी पे, तो दे ऑल गेट डिवॉल्व्ड एंड कन्वर्टेड इनटू फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. एंड इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, यू हैव टू गिव अ कॉन्ट्ररी इंस्ट्रक्शंस टू एक्सचेंज. इन दैट केस पोजीशंस बिकम वर्थलेस, और आउट ऑफ द मनी की पोजीशंस तो वर्थलेस होने ही वाले हैं. तो दीज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर बेस्ड ऑन कैश सेटल्ड फ्यूचर्स, they expire 2 days prior to the expiry of futures contract. That is the only understanding point. Otherwise तो ये expiry day हमको launching के time available होती है, right? So you can do a lot many strategies. जब strategies की बात करेंगे, I have not included strategies here because it is very subjective. People who trade in option, based on the trader's view, a lot of strategies are possible. So it depends whether you are making strategies with the physical underlying, or you are making a strategy with futures as a product, or are you making strategies with using options only with different strike prices and expiries. So you can do a lot of strategies. You can do an arbitrage strategies here. You can deal with synthetic options, right? So strategies is what we leave to the participants on their understanding about the market. But yes, as compared to futures, you can do a lot of strategizing using options for the scenarios which would be there in the market from time to time. Okay. Next, what we have is the index derivatives, which are also available. I told you we have segmental indices on the exchange, right? So based on which we have derivatives also, currently futures which have been allowed to be traded on the exchange. When these products were allowed, they are not so very far old products. In August 2020, first index derivatives in Boolean side futures on Boolean index was allowed. Then subsequently, after 2 months, metal index futures were allowed. In 2021, energy index futures were also allowed. And 2 months ago, SEBI, which is the regulator, they have already given the guidelines. हमको guidelines आ गया है index options के लिए. So we are working on it and we have done some submission to the regulator, and maybe in a month or so, or maybe around 2 months time, sooner we get an approval and vetting done by the regulator, हम लोग वो options भी available कराएंगे जो कि index options बोला जाएगा. So if you open an index screen, आप हमारे indexes पर जाते हो, तो don't get surprised when you see more indexes. मैंने आपको 3 बताए थे, Boolean, Metal and Energy, लेकिन आपको वहाँ पे और index दिखेंगे जिसको हम बोलते हैं single commodity indices. आपको वहाँ पे स्क्रीन पे गोल्ड इंडेक्स भी दिखेगा, सिल्वर इंडेक्स है, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, निकल, जिंक, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, आपको ये दिखेंगे. आपको एक ओवरऑल कमोडिटी इंडेक्स भी दिखेगा. तो लेट अस जस्ट टॉक वन बाय वन. व्हाट इज द सिंगल कमोडिटी इंडाइसेस? These are excess return indices. They are made to keep the prices perpetual. These indices, they don't expire, single commodity indices. Okay. And they are made out of the near month futures contract of the corresponding product. इसका मतलब अगर गोल्ड इंडेक्स रनिंग है, तो अभी जो 3 जून का गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, नियर मंथ गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट 1 kg का, उसके वैल्यू पे हमारे गोल्ड इंडेक्स की वैल्यू आ रही है. एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एक्सेस रिटर्न. इज that whatever return we see on day-to-day and real-time basis on the futures contract of gold 1 kg, we see same percentage return on the
gold index value on real time basis and towards the end of day. But beauty is these indexes, which are single commodity indexes, which are made in such a way that they don't expire. हमारे अंडरलाइंग गोल्ड फ्यूचर्स एक्सपायर हो जाए, तो इंडेक्स कैसे बना है कि एक्सपायरी से कुछ दिन पहले, टेंडर पीरियड स्टार्ट होने से 2 दिन पहले, हम लोग नियर मंथ के प्राइजेस को छोड़ के नेक्स्ट मंथ ऑफ गोल्ड के प्राइजेस को लेके गोल्ड इंडेक्स को कंटिन्यूस रख रहे हैं. इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस बाय द बैक एंड ऑफ द एक्सचेंज. सो इन ऑर्डर टू हैव अ कंटिन्यूस गोल्ड इंडेक्स, टू हैव कंटिन्यूस सिल्वर इंडेक्स, so this process is followed in all the indices. Why they are made continuous indexes is one, it is irrelevant whether we are having an underlying futures contract or gold or any single commodity index, because हमारा जो भी रिटर्न आ रहा है वो सेम है. These indexes are capturing the same percentage return. Second advantage is these are kept perpetual. These indexes don't expire, and since they don't expire, we use these indices as constituents by giving weightages to them to make segment indices. इसका मतलब बुलियन इंडेक्स को बनाने के लिए जो भी वेटेजेस है वो गोल्ड और सिल्वर इंडेक्स को दिया जाता है, क्योंकि वो परपेचुअल होता है. तो गोल्ड और सिल्वर इंडेक्स को वेटेज देके हमारा बुलियन इंडेक्स बनता है. एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, निकल, जिंक सिंगल कमोडिटी इंडाइसेस को देके हमारा मेटल इंडेक्स बनता है. सिमिलरली क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस सिंगल कमोडिटी इंडेक्स को देके हमारा एनर्जी इंडेक्स बनेगा. तो दिस इज इंपॉर्टेंट व्हिच आई वांटेड टू टेल यू, दैट देयर आर आल्सो सिंगल कमोडिटी इंडाइसेस, दे आर ओनली फॉर रेफरेंस एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग. We also have an overall composite index जो overall 4 segments की value को determine करके बन रहा है, weightages करके बन रहा है, but still that is only a viewable figure because derivatives on this composite index is not allowed. But ये क्या दिखाता है, ये overall जैसे Sensex Nifty दिखाता है हमको कि overall equity market कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसका सारे सेगमेंट्स एंड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के स्क्रिप्ट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है. यहाँ पर कंपोजिट इंडेक्स में सारे सेगमेंट्स, 4 सेगमेंट्स का वेटेज होता है. तो ओवरऑल कमोडिटी मार्केट कहाँ जा रहा है वो आने वाले टाइम पे अगर यहाँ पर इंडेक्स डेरिवेटिव्स रेगुलेटर से हमको परमिशन मिलता है तो यू विल फाइंड दोस डेरिवेटिव्स आल्सो अवेलेबल एंड यू विल ट्रेड ऑन देम. बट द टॉक ऑफ द आवर इज वी आर planning to launch index options very soon. Now all these indexes which are made, they have started at some value, that is a base value of 10,000, which is from the base date of 31st December 2015, and now indexes are running with their current values, with the current market dynamics of single commodity indices weighted into a segmental index, and they are all running live based on their market performance on daily basis, on real time basis. Okay, now since these indices are there, the single commodities indices are also there, segment indices are also there, तो उनकी कोई weightage भी होगी. तो ये weightage हमको कहाँ मिलेगी? These are all announced by the exchange. तो जैसे Boolean index is made of gold index and silver index, किस वेटेज में है? ये लास्ट ईयर की वेटेज भी दी है और करंट ईयर की वेटेज, ये आपको दिखाने बताने के लिए है कि वेटेजेस आर नॉट केप्ट सेम. These weightages are changed on an annual basis. तो जो भी वेट 2020 ईयर के लिए है वो पूरा साल सेम रहेगा. ओके, जैसे अभी करंट वेट चल गोल्ड इंडेक्स का है 63.702647 एंड सिल्वर का है 36.297353. दिस रिमेन सेम फॉर अ कंप्लीट ईयर 2022. Okay, new weights for year 2023 will be announced in October 2022, which gets into effect from January 2023, and they will remain same throughout the year. So this is called as an annual rebalance. If you compare it with equity market, वहां पर biannual rebalancing होती है weights की indexes में. कमोडिटी मार्केट में जो इंडाइसेस हैं उनकी एनुअल रीबैलेंसिंग होती है, और ये वेट्स आपको एडिक्वेटली 2 से 2.5 महीने पहले पता होते हैं कि जनवरी मंथ से नए वेट्स कौन से रहने वाले हैं, सो दैट यू कैन कीप योर स्ट्रेटजीज रेडी विद द न्यू वेटेजेस. ओके, ये वेटेजेस किस बेसिस पे डिफाइन होते हैं? इट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट. द वेटेजेस आर डिटरमाइंड बाय अ सेट formula which is available easily on the website of the exchange, but the understanding is we consider both physical market and derivative market to get these rates. मतलब
लास्ट एक साल में 12 महीने में हमारा जो फ्यूचर डेरिवेटिव्स मार्केट की जो लिक्विडिटी है उसको हम कंसीडर करते हैं, और लास्ट 5 साल में एवरेज हमारा फिजिकल मार्केट साइज में प्रोडक्ट की कितनी अवेलेबिलिटी है, उसकी क्या वैल्यू है, उसको कंसीडर करके वेटेजेस देते हैं। ओके, ये वेटेजेस एवरी ईयर अक्टूबर में अनाउंस होते हैं और जो आने वाले जनवरी से एप्लीकेबल होते हैं, जिसको एनुअल रीबैलेंसिंग बोलते हैं। नाउ let us just see a small in a miniature specifications for these index derivative index futures. All these index futures they have their underlying as the running index. अगर ये boolean index futures है तो इसका underlying क्या होगा, boolean index. metal index futures है, underlying क्या होगा, metal index. energy index futures का correspondingly underlying will be energy index. Now trading unit of these indices for bullion and metal, it is 50 times the current index value. Energy index का होगा 125 times the energy index value. This is as per the guidelines of the SEBI. Contract 5 लाख के कम का वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो accordingly we have kept this and product is like this. Tick size minimum price movement तीनों सेगमेंट के इंडेक्स फ्यूचर्स का एक यूनिट है। एक यूनिट मूव होने पे बुलियन और मेटल इंडेक्स पे 50 रुपए का हार जीत आता है, एनर्जी इंडेक्स पे 125 का हार जीत मिलेगा आपको। यहाँ पर जो मार्जिन होते हैं बुलियन इंडेक्स के, ये एक एडवांटेजियस प्रोडक्ट बन जाता है, बिकॉज आप यहाँ पर रिस्क रिड्यूस्ड प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो। जैसे गोल्ड और सिल्वर प्रोडक्ट की इंडिविजुअल वॉलेटिलिटी अलग हो सकती है, लेकिन जब हम उसका इंडेक्स बनाते हैं, उसको वेटेड वेट्स देकर बनाते हैं, वेटेड एवरेज करते हैं उसको, तो उस जो वेटेड एवरेज से जो इंडेक्स बनता है और इंडेक्स डेरिवेटिव जो बनते हैं उस इंडेक्स पे, उनका जो रिस्क होता है वो कम होता है। तो यहाँ पर आपको इंडेक्स डेरिवेटिव से कम मार्जिन लगते हैं। आई हैव एन एग्जांपल ऑन सम वैल्यूज, वो आपको दिखाऊंगा। सो दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ लोअर वैल्यू, और लोअर वैल्यू पे जो रिस्क लेस रहता है इन प्रोडक्ट्स में, डाइवर्सिफाइड रहता है, तो इनके मार्जिन और कम लगते हैं। ओके, नाउ एट एनी पॉइंट इन टाइम इंडेक्स डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स में आपको 3 एक्सपायरी मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं, नियर मंथ, मिड मंथ एंड फार मंथ। नियर मंथ एक्सपायर होता है तो एक और फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट एड ऑन हो जाता है। ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट इज यहाँ पर सारे कैश सेटल प्रोडक्ट है। आप देखिए, बुलियन इंडेक्स है, एनर्जी इंडेक्स है या मेटल इंडेक्स है, इनके जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे कैश सेटल्ड है। तो देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस। बुलियन इंडेक्स के जो फ्यूचर्स हैं कैश सेटल्ड हैं, लेकिन अंडरलाइंग कॉन्स्टिट्यूएंट फ्यूचर्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड 1 kg और सिल्वर 30 kg, जिनसे इंडेक्स की वैल्यूज आ रही हैं, वो डिलीवर्ड प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पर एडवांटेज होता है, क्योंकि ये कैश सेटल प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर टेंडर पीरियड मार्जिन, डिलीवरी पीरियड मार्जिन, इंटेंशंस रिसीविंग, डिलीवरी मार्किंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। You can keep your strategies till the last minute of the trade, and these products will get cash settled, right? Now, these products are available, you know, corresponding to other futures contract on the exchange. ये सुबह 9 बजे से रात को 11:30 बजे समर टाइम्स एंड 11:55 विंटर टाइमिंग तक अवेलेबल होते हैं ट्रेड होने के लिए। But you have to remember that on expiry day, these contracts, index futures are available only till 5 o'clock. 5 बजे एक्सपायरी डे पे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएंगे। डीडीआर कैसे आएगा? डीडीआर हमारा लास्ट 1 आवर 4 to 5 o'clock, लास्ट 1 आवर की अंडरलाइंग कॉन्स्टिट्यूएंट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की जो वीवैप आएगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के बेस पे जो भी इंडेक्स की वैल्यू आएगी, उस पे हमारा प्रोडक्ट कैश सेटल्ड होगा, राइट? तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको इसकी थोड़ा सा कॉस्ट के हिसाब से बताऊंगा, विद अ डिस्क्लेमर दैट आई हैव नॉट अज्यूम्ड एनी ब्रोकरेज और कमीशन। ये सिर्फ कुछ चार्जेस के हिसाब से मैंने कॉस्ट ली है, एंड दीज फिगर आर नॉट रियल टाइम फिगर्स। ये मैंने अभी से 4 से 5 दिन पहले के फिगर्स लिए कि आपको मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा पाऊं, राइट? I don't want to give you know any takeaway view from here. I just want to make you understand the product. तो एग्जाम्पल अगर एक लेते हैं, बुलियन इंडेक्स देखिए यहाँ पे, अगर बुलियन इंडेक्स की वैल्यू करंट 14,500 है, तो प्रोडक्ट की क्या वैल्यू होगी बुलियन इंडेक्स फ्यूचर्स? इट वाज 50 टाइम्स द इंडेक्स वैल्यू। 50 टाइम्स द इंडेक्स वैल्यू मतलब 7,25,000 का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, आप जब भी इस कॉन्ट्रैक्ट पे बाय या सेल करते हो, तो यू गेट एक्सपोजर टू बोथ गोल्ड एंड सिल्वर इन द वेटेज ऑफ द इंडेक्स। अगर यही आप मेटल इंडेक्स पे ट्रेड करते हो, इंडेक्स 19,700 पे चल रहा है,
तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है 9,85,000 एंड विद वन ट्रेड यू गेट एक्सपोजर टू ऑल 5 बेस मेटल्स। तो एक प्रोडक्ट पे काम करने से आपको सारे अंडरलाइन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे एक्सपोजर मिल जाता है। ये बहुत छोटे प्रोडक्ट हैं, दीज वैल्यूज आर वेरी लेस। अगर आप गोल्ड और सिल्वर पे इंडिविजुअल ट्रेड करते हो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे, आई हैव अ स्लाइड फॉर दैट एज वेल, आगे जाके स्लाइड आएगी, वो वैल्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू दी इंडेक्स वैल्यूज। प्लस ये कम रिस्की प्रोडक्ट है। एक टिक मूवमेंट पे बुलियन एंड मेटल इंडेक्स पे 50 रुपए का हार जीत आता है, एनर्जी पे 125 का ही हमने देखा था। अब जो ये फीस है, ये मैं सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन के लिए ले रहा हूँ। आप एक राउंड ट्रिप करते हो तो आपको एक्सचेंज के कुछ फीस लगती है, उस पर जीएसटी लगता है, बायर्स को स्टैम्प ड्यूटी लगती है, आप बाय करते हो और सेलर को सीटीटी लगता है, प्लस आपकी ब्रोकरेज या मार्जिन वट एवर यू नो इज योर अरेंजमेंट विद द ऑथराइज्ड ब्रोकर ऑन द एक्सचेंज, वो भी चार्जेस लगेंगे व्हिच आई हैव नॉट इंक्लूडेड। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू that if I do a round trip in a Boolean index without, adding in the brokerage charges and other things from the commissions and other things from the brokerage side, my cost comes to, for an example, 132 rupees. Okay. And per tick, my profit or loss is 50 rupees. So if gold Boolean index moves by 3 ticks, that is 150 rupees movement. If I can see with 3 takes, my cost gets covered here. And if I include brokerage, so maybe within 4 takes or 3.5 takes, I achieve my break even and go towards profit scenario. Similarly in these metals, maybe around 4 takes you will have, within 4 takes you'll have a break even. And energy, if you talk within 2 takes, you have the break even and you move to, profit scenario. So products wherein break even is nearer are generally preferable by people who trade in the markets. So this is where I'm giving you a contrast on old figures, 5 to 6 days old figures are the basis पे बता रहा हूँ, right? देखिए contrast. If I want to trade in full bullion segment, तो मैं gold और silver futures पे दोनों पे position ले सकता हूँ. If I took a position in gold 1 kg futures and silver 30 kg futures, which are constituents for bullion index, एक टिक मूवमेंट से गोल्ड के प्राइसेस पे 100 रुपए का हार जीत है, सिल्वर फ्यूचर्स पे 30 रुपीज का हार जीत है। इफ गोल्ड प्राइस इज रनिंग एट 50,959 एंड सिल्वर इज रनिंग एट 61,497, तो गोल्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट की? 50 लाख, रफली 51 लाख, क्योंकि 50 लाख 95,000 है। ओके, सिल्वर फ्यूचर्स कितने का आ जाता है? 18 लाख का। तो अगर आप दोनों गोल्ड और सिल्वर पे काम करते हो फ्यूचर्स पे एज अ बुलियन सेगमेंट, तो आपका जो पोर्टफोलियो बन जाता है वो अराउंड 69 लाख का बन जाता है। 69 लाख पे मार्जिन आप गोल्ड पे देखिए 7% है, 7.25, सिल्वर पे 11.25, तो लगभग 5.5 लाख का मार्जिन, उससे ज्यादा का मार्जिन आपके अकाउंट में होना चाहिए। और प्रोडक्ट्स एट दी एंड कंपल्सरी डिलीवर्ड है, फ्यूचर्स है। इन्हीं के बेसिस में हमारा जो बुलियन इंडेक्स बन रहा है और उसके जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है जो मैंने आपको बताया था, उनका कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है? 50 टाइम्स द इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स अगर 14,492 पे चल रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी हुई? 7,24,600 as compared to 69 lakh. This is a very small value. And look at the margins. Since it is a risk diversified product, margins are very less. 6% of 7,24,000, which is 43,476, gets blocked from your account, and you get exposure to both silver and gold movement. And beauty is these products are cash settled at till the end. राइट? इफ आई कंपेयर विद द अदर सेगमेंट, मेटल्स की बात करें, मेरे को पांचों बेस मेटल में काम करना है, लेकिन पांचों के बारे में मैं जानता नहीं हूं। आई ओनली अंडरस्टैंड कॉपर, बट आई वांट टू ट्रेड इन ऑल ऑफ देम। So the easiest way is to take positions in metal index futures. आप अगर सब में individual, if you suppose you are expert and you want to take positions in all the base metals, आप अगर सारे base metals में एक साथ positions लेते हो, do you think how much contract value is you will be trading on? Aluminium roughly 11 lakh, copper around 18.8 lakhs, lead 9 lakh, nickel 34 lakhs, zinc 15 lakhs. So if I total this up, it will be more than 80 plus 85 lakhs is the value. और आप इनके मार्जिन देख लीजिए, some product it's very high. Aluminium 10.95, 9.25 in copper and lead, 29 to 30% in nickel and 13 to 14% in zinc. My God, that becomes a bigger figure. Rather than, as a contrast, अगर मेरे पास metal index futures मिल रहा है,
जिसकी 19,754 वैल्यू चल रही है, तो 9,87,000 कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आती है 6% मार्जिन, which is only 59,000 with March money. I could get an exposure to all the base metals and product ends in cash, on expiry. Let us just see a contrast on crude oil and natural gas. Crude oil and natural gas, आप बोल सकते हो कि they are also cash settled product and energy index futures is also cash settled product. But look at what is happening. अगर मैं crude oil and natural gas में काम करता हूँ, तो my product portfolio value becomes 15 lakh as compared to 11 lakh in energy futures, energy index futures. Look at the margin, very volatile products, crude oil and natural, 22+% margin on crude oil and 32+% on natural gas. तो आप देखेंगे लगभग 3 लाख के करीब आपका मार्जिन ब्लॉक हो जाएगा अगर आप बोथ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में एक साथ काम करते हो। वेज एज कंपेयर टू एनर्जी इंडेक्स फ्यूचर्स, आपका देखिए मार्जिन परसेंटेज बहुत कम है, रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाता है 11.25%, 11 lakh कॉन्ट्रैक्ट साइज है, तो 1,30,000 मार्जिन पे करके यू कैन trade on these products. So overall, the advantages of index futures in a nutshell is they are smaller size contracts. You have seen in the last slides. These contracts are all cash settled, so you can keep your positions open and strategies open till the last moment on the exchange. Their break-even achievement and profit churning is within some ticks on the exchange, so you can plan your trades accordingly. So whenever we are on derivative, we automatically have a lesser risk instrument available because risk is diversified when weightages are assigned. प्लस ये इंडाइसेस पूरे सेगमेंट एंड इंडस्ट्री एज अ बेंचमार्क यूज करेगी एंड इट्स वॉल्यूम्स एंड पार्टिसिपेशन विल फर्दर एनहांस विद इन टाइम्स टू कम। प्लस आप इन प्रोडक्ट्स को लेके बहुत सारी स्ट्रेटजीज बना सकते हो। वी हैव सीन सम काइंड ऑफ जॉबिंग एंड अदर काइंड ऑफ ट्रेड्स व्हिच have subsided, but now they have again re-emerged with such kind of products with quicker break-evens, right? So this is where I would like to stop. For more details, you can visit www.mcxindia.com and you can browse through TradeSmart website. Do subscribe to the video and keep checking for more videos and keep learning. Thank you very much. This is where I stop right now. Thanks a lot. So where to look for the option tables? You can browse those data on the website www.mcxindia.com. Easily available. You'll find option chain also available there. You'll find option calculators also there. Everything with product relation data is available. And when you are dealing with your member, they will provide you with the live feeds as well. Thank you, sir.